surface areas and volume. The first figure, cuboid. In the case of cuboid, it's a box, a length, breadth, and height are given. Length L, breadth B, and height H. Length, breadth, and height. Okay. Length, breadth, and height. Listen. This is a cuboid, and this book is a cuboid. In this cuboid, what is this length? This is length, and this part of the cuboid is breadth, and it is height. Length, breadth, and height. And in the case of cuboid, how many faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And what is the shape of each face? Rectangle. All the face, that is rectangle. And all face, that is rectangle. Now listen. What is this? L, and length L. And it is breadth B. And height. Then what is the area of this face? L into B. L into B. What is the area of this face? The total surface area? 2LB. 2 into LB. Next. What is the area of this face? What is this? What is this? B. What is this? B. And it is H. What is the area of this face? B into H. And what is the area of this face? B into H. Total 2BH. ये 2LH हो गए, so 2LB हो गए और 2BH. What is the area of this face? LH. What is the area of this face? Total. What is the total surface area of the cuboid? 2LB plus 2BH plus 2LH, which is common. 2. So what will be the answer? 2 into bracket LB plus BH plus LH. That one. So first, TSA, total surface area, 2 into LB plus BH plus LH. Okay. 2 into LB plus BH plus LH. Next. If it is open at the top, then TSA is equal to, क्या फर्क होगा? Open at the top. It is open at the top. Open at the top. Then what is this total surface area? Reduce 1 LB from 2 LB. बाकी same आएगा, है ना? So what will the answer? LB plus 2BH plus 2L. एक ही LB आएगा. And even it's open at the top and bottom, both sides. So 2BH plus 2
LH. That is also called. So A भी open है, A भी open है. So this सिर्फ A वाला part आएगा. देखो ये और ये वाला part is called lateral surface area, or is also called area of the four walls of the room. Area of the four walls of a room. Area of the four walls of a room में ceiling or floor not included. In area of the four walls of the room, ceiling and floor not included. So what will be the answer saying? That is also called lateral surface area. Lateral surface area. Lateral surface area is equal to, that is also write in bracket. We can also write this is in the form of area of four walls of a room. Area of four walls of a room is equal to 2 into LH plus 2 into BH, which is common. That is 2 into bracket L plus B into H. 2H commonly. The 2 into L plus B into H. What is 2 into L plus B? Perimeter of the rectangle. Perimeter of the rectangle. The perimeter of the rectangle into height. It will catch is lateral surface area. Lateral surface area. So ये याद कर लो 2 into L plus B into H. Next आएगा volume. Volume is equal to, general formula to find the volume. Volume is equal to base area into height. Base area into height. What is the shape of the base? What is the shape of the base? Find the area of that base into height. What is the shape of the base? Here, what is the shape of the base? What is the area of the rectangle? L into B. What is its height? What is the volume? L into B into H. Base area. What is the shape of the base? Base area into height. Suppose a cylinder. In the case of cylinder, what is the shape of the base? Circle. What is the area of the circle? Pi r square. Height is H. What is the volume of the cylinder? Pi r square H. General formula to find the volume is base area into height. Base area into height. Okay, base area into height. That is equal to, what is the base area? L into B. Height is H. So, volume of the cuboid is equal to L into B into H. Next, एक और याद कर लो. Length of diagonal. पूरा 9th क्लास में किया था ये पूरा. Length of diagonal, that is equal to under root L square plus B square plus H square. What is the length of diagonal? Under root L square plus B square plus H square. ये याद कर लो in the case of cuboid. So cuboid में क्या क्या याद करना क्लियर है? ज़रा. Right. Next, cube. What is the difference between cube and cuboid? In cube, length, breadth and height are equal. Length, breadth and height are equal. And equal to A, suppose. Length equal to breadth equal to height is equal to A. A is the side of the cube. So draw the figure.
What is the shape of the each face of the cube? Square. And it is A, length, breadth A, and height is also A. Means length is equal to, breadth is equal to height, equal to A. Means length equal to A, breadth equal to A, height is equal to A. So first, TSA. What is the total surface area of the cube? Listen, what is the value of L? A. What is the value of B? A into A square. A into A into A square plus A square plus A square into 2. Total surface area 6A square. Next, lateral surface area. Lateral surface area. देखो third part. What is the formula? देखो 2 into L plus B into H. What is the value of L? B, H, A plus A, 2A into 2 into A. So 4A square. Lateral surface में कितना फेस आएगा? 4 ही फेस आएगा ना तीनों, और सब फेस के शेप के होते हैं स्क्वायर है. What is the area of the each square? A square. So 4 into A square. 4 into A square. Next, volume. And what is the volume of the cube? Cuboid. L into B into H. What is all of L? B. A into A. A cube. Fourth, length of diagonal. Length of diagonal is equal to, length of diagonal is equal to under root A squared plus A squared plus A square root 3 A square. A square तो बाहर लिख सकते हैं, तो क्या आंसर होगा? root 3 A. root 3 A and under root A square plus A square plus A square under root 3A square. तो A square root के बाहर आए तो root 3 A square. A square बाहर लाए तो क्या हुआ? A है ना. Next cylinder. Cylinder. Radius, a height. Listen, in the case of cylinder, height of the cylinder is H. What is the height of the cylinder? Radius of the cylinder is R. What is the radius? R. This yellow region is called what? Curved surface area. Means ये पूरा, ये नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है ना, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये वाला रीजन है, ये पूरा रीजन is called what? All this region is called what? CS. This yellow region is called what? Curved surface area. Now listen. What is the shape of this? What is the radius of the cylinder? Then what is the length of this part?
2 pi r. 2 pi r. Or length of this h. It is h. और this part is 2 pi r. हमको क्या फाइंड करना है? ये येलो रीजन के एरिया फाइंड करना है. मैं इसको ओपन कर दिया. देखो व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस 2 pi r और h. मैं ओपन किया तो ये क्या शेप है? ये क्या है था हमारा 2 pi r. ये क्या है था? ये क्या शेप है? Rectangle. What is the area of the rectangle? This into this, the 2 pi r into h. This is 2 pi r and it is h. So what is the CSA of the cylinder? 2 pi r h. CSA of the cylinder is equal to CSA is equal to 2 pi r h. और बताओ टीएसए में क्या होगा? टीएसए में क्या क्या इंक्लूड करना? बेस है ना, ये भी इंक्लूड करना बेस. व्हाट इज द शेप ऑफ द बेस? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द अपर पार्ट? पाई आर स्क्वायर है ना. दैट इज आल्सो सर्कल एरिया पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए दोनों आएगा ना. सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. क्या कॉमन है इसमें? 2 पाई आर कॉमन है. सो अंदर आर प्लस एच. सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, वॉल्यूम. Volume, general formula to find the volume. Base area, what is the shape of the base? Circle. What is the area of the circle? And its height is h. So pi r squared into h. Volume, pi r squared into h. So what is the volume? Pi r squared into h. Next. Cone. R, H, and it is L. What is L? Slant height. L is called slant height. What is L? What is L? Slant height. Or what is the relationship between L, H, and R? What about triangle it is? Triangle. So we can apply Pythagoras theorem. So write down L square is equal to H square plus R square. Now find CS. CS means only this part, not include this base. Only this part. Okay, only the outer part, not the base. What is CSA? So we can also derive this formula by using semicircle. Semicircular प्लेट से डिराइव कर सकते हैं. मैं अभी डायरेक्ट लिख दें. CSA is equal to, what is the formula? Pi r l. What is the formula to find CSA? Pi r l. Curved surface area of the cone, pi r l. What is the curved surface area of the cone? Pi r l. Total surface area. Total surface area means include the base of the cone. In total surface area, include the base of the cone. What is the shape of the base of the cone? What is the area of the circle? So pi r square plus pi r l. Common. Pi r common. Under r plus. So what is the TSA of cone? Pi r into r plus l. Pi r into r plus l. Now volume. Listen. Take
a cylinder and a cone both have same radius and same height. Take a cylinder and a cone. The radius of the cone is r and radius of the cylinder is also r. Height of the cone is h. Height of the cylinder is also h. And a cone that contain a full of water. A cone that containing full of water. Transfer this water into cylinder. Both have same height and same radius. And the cone containing full of water. You have to transfer this water into the cylinder. Then we can observe that only 1/3 of the cylinder is filled with the water. By using that cone, we can fill only 1/3 of the cylinder. So what is the formula of the volume of the cone? 1/3 of the volume of the cylinder. What is the volume of the cylinder? Pi r squared h. What is the volume of the cone? 1/3 pi r squared h. Volume of the cone is equal to 1/3 pi r square. Clear? 1/3 pi r squared h. Next, sphere. Sphere. Yeah, it is a sphere. In the case of sphere, radius r. R is the radius of the sphere. Then is listen, इसमें सी एस से टी एस से कुछ अलग नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही होते हैं. So the surface area of the sphere, surface area of sphere is equal to formula 4 pi r square. What is the surface area of the sphere? 4 pi r square. And volume is equal to 4/3 pi r cube. So what is the volume of sphere? Or surface area of the sphere? 4 pi r square. And the half of the sphere is called hemisphere. The half of the sphere, that is called hemisphere. The half of the sphere is called hemisphere. In the case of hemisphere, what is this? Radius, and it is also radius. एक ही बात है, ठीक है? Radius. अब बताओ, इसमें सी एस से और टी एस से अलग अलग होते हैं. सी एस से में सिर्फ ए वाला पार्ट इंक्लूड है. देखो ये सी एस से होता है. मैं डार्क कर रहा हूं इसमें. What is this? CSM is the half of the sphere. So what is the CSA of the hemisphere? I don't know. CSA of hemisphere is equal to 2 pi r square. Now TSA. TSA of hemisphere is equal to
इसमें ए भी इंक्लूड करना, देखो ये वाला पार्ट रीजन भी इंक्लूड. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पार्ट? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? द 2 pi r square plus pi r square, 3 pi r square. 3 pi r square. Volume is the half of the sphere. So what is the volume? I don't know. Volume is equal to 2 by 3 pi r cube. So what is the volume of the hemisphere? 2 by 3 pi r cube. The half of the sphere. Volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube, and that of hemisphere 2 by 3 pi r cube. इतना फिगर हमारा सिलेबस में क्लियर है? क्लियर? अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना? लिसन, इसको कैलकुलेशन पार्ट कैसे सॉल्व कर रहे हो और क्या क्या करने एक चैप्टर में, देखो एक बार आइडिया दे तुम्हें. क्लोज योर कॉपी एंड लिसन हियर. जो हम किया था 9th क्लास में, सिंगल फिगर किया था सिलेंडर का और कॉन स्फीयर, इसमें मिक्स होता है. एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर एक सिलेंडर होगा, हेमिस्फीयर इसके ऊपर एक कॉन हो सकता है, और 2 हेमिस्फीयर इज अटैच टू द बोथ एंड्स ऑफ द सिलेंडर. ऐसे वाला क्वेश्चन हो सकता है. तो क्या 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 करना है इसमें देखो. लिसन, सपोज ए होलो सिलेंडर इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर. ए होलो सिलेंडर, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन में. होलो गिवन है और सॉलिड गिवन है. If it is given solid, इसका मतलब है it is filled with a material. It is filled with a material. Example, a ball and a shot put. What is the difference between a ball and shot put? Both are sphere है, but ball is the hollow sphere. इसके अंदर space होता है, air होता है. But shot put is a solid sphere. इसके अंदर material fill किया होगा. It is filled with a material. It is filled with a material. It is filled with a material. ये hemisphere. What is this? Hemisphere. This is R and it is R. इसके ऊपर क्या चीज है? एक सिलेंडर है. यह होल होता है, so it is open होता है. इधर ओपन है. अगर क्वेश्चन पूछा तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सपोज ए वेसल है. यह एक्चुअल फिगर ऐसे होता है. देखो ये सिलेंडर है, नीचे ये शेप होता है. What is this? Vessel. So what is the total surface area of vessel? टोटल पूछे, इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस, ये रॉन्ग है, ये मत करना. दिस द एरिया which is in contact with the air, means exposed outside, means in contact with the air. You have to find the area of that part. TSA मतलब the area that is in contact with the air or which is exposed outside. You have to find the area of that part. Here, which part of the region is exposed outside here? ये देखो, ये क्या है? मीन्स ये क्या चीज है? सिलेंडर के क्या चीज है? CSA. ये CSA of the cylinder होता है. This is the CSA of the cylinder, है ना? This वाला part है CSA of the cylinder. The CSA of cylinder. CSA of plus, इसके बाद ये भी है ना, ये क्या है? CSA of hemisphere. ले रहा है? इसका नहीं करना है, ये वाला पार्ट का नहीं करना है, क्योंकि ये देखो ये ओपन है पूरा. क्लियर है? सुन रहा हूं? ठीक है. सो देखो ये समझ में आने के लिए मैंने ऐसे सेपरेशन कर दिया. बस ये फिगर का इसी किया था. ऊपर सिलेंडर है, एक नीचे है हेमिस्फीयर है, इसलिए मैं ऐसे फिगर ड्रॉ किया. एक्चुअल फिगर ये होता है. ठीक है? एक्चुअल फिगर ये होता है. ये होता है एक्चुअल फिगर. ये समझ में आने के लिए मैं ऐसे कर दिया, बस कन्वर्ट किया. क्लियर है? क्लियर है? इंटीरियर पूछा तो फॉर्मूला तो यही आएगा, CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर. इंटीरियर भी ये शेप होता है. देखो ये सिलेंडर है और नीचे हेमिस्फीयर है ना. इंटीरियर भी ये क्या होता है? CSA ऑफ द सिलेंडर. और ये क्या होता है? CSA ऑफ द हेमिस्फीयर. CSA ऑफ द हेमिस्फीयर. क्लियर है?
CSA of the hemisphere. What is this? Cylinder. ऊपर क्या है? What is the total surface area of this figure? CSA of cylinder plus CSA of the. अगर मैं पूछे suppose solid है, this is a solid है, ये wooden है, ये wooden है, it is made up of wood, it is made up of wood, wooden material है, it is made up of wood, it is made up of wood. So ये क्या होगा? Closed. ये fill क्या होगा? So what is the total surface area of this figure? CSA of the cone plus CSA of the cylinder plus base area of the cylinder. अगर होल आए तो ये इंक्लूड नहीं होगा, अगर सॉलिड आए तो ये इंक्लूड होगा. क्लियर है? समझ रहा हूं? Now listen. What is the total surface area of this figure? CSA of the hemisphere plus CSA of the cone. CSA of the cone. टोटल सरफेस एरिया पूछा तो ये करना चाहिए. क्लियर है? ठीक है. और what is the total surface area of this figure? CSA of the cylinder plus CSA of the two hemisphere. Two hemisphere. A cylinder that is made up of wood. A conical part is cut out from inside. तो ये शेप बन जाएगी. देखो ये वुड है तो नीचे पूरा फिल किया हुआ, कट करने के बाद ये शेप बन गई है ना. सॉरी, ये शेप. What is the total surface area of this figure? CSA of the cylinder plus CSA of the cone. माइनस नहीं होगा इसमें. CSA of the cone ऐड करना है क्योंकि ये रीजन का एरिया फाइंड करना है. ये CSA of the cone हो गई, ये कौन सा रीजन हो गई? CSA of the cylinder प्लस इसका एरिया कौन सा है? पाई आर स्क्वायर. अगर सॉलिड है तो wood is a solid. So we have to find a base area of the cylinder. Pi r square. ये ठीक है. और कैलकुलेशन में क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे. हर फॉर्मूला में पाई है ना, पाई के वैल्यू 22/7. अगर 22/7 आ रहा है, 22 है ना, इसको लिख दो आप लोग 2 into 11. जो मैं किया था 9 क्लास में, तो बता दिया. सेम प्रोसेस. 2 into, so 11 से मल्टीप्लाई. हाउ टू मल्टीप्लाई विथ 11? हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 11? एग्जाम्पल 63 into 11. 63 into 11. So write down first 63 as it is. Yes, 63 में 63 as it is, and leave some space between 6 and 3. Add these two numbers, 6 plus 3. 9. So answer is. So इस वाला जो इंसर्ट वाला जो कितना क्वेश्चंस है, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट ऑरली आपका आंसर लिख सकते हो विदाउट कैलकुलेशन. ये क्लियर है? 693. अब बता सकते हैं 71 into 11. 7 plus 1. अगर रिमाइंडर है तो क्या कर सकते हैं? देखो 69 into 11. 9. 6 plus 9 15. देखो 6 plus 9 15. 2 डिजिट आ रहा है, बट लास्ट डिजिट कौन सा? रिमाइंडर. ये 1 लास्ट फर्स्ट डिजिट को ऐड कर देना. 6 plus 1. So answer is 759. 75 into 11. 75. 7 plus 5. 12. So 2 लिख दिया मैं. रिमाइंडर 1.
ऐड कर दो 825, ये 2 डिजिट, 3 डिजिट है तो क्या कर लो, देख सकते है, और 3 डिजिट देख सकते हैं 195 इंटू 11, 195 इंटू 11। वैसे जो लास्ट डिजिट कौन सा है, 5 है, इसको सेपरेट कर दो और रिमेनिंग डिजिट ये कर दो, लास्ट को सेपरेट कर दो, कुछ भी नंबर आया तो, अगर 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, सेम प्रोसेस अप्लाई कर दो, क्लियर है। सो 19 और 5 अलग अलग कर दो, 19 और 5 अलग कर दो, 19 और 5 सेम प्रोसेस, 19 प्लस 5 24, लास्ट डिजिट, रिमाइंडर 19 से ऐड कर दो 2 1 4 5, क्लियर है, 2 1 4 5, क्लियर। 263 into 11, 26 3, 26 plus 3 29, remainder 2 2893। अब 4 डिजिट है तो ये कर सकते हैं, देखो 1026, बताओ 1026, 102 plus 6 108, last digit, remainder 102 plus 10 11286, ये क्लियर है, एनी डाउट्स, ये याद कर लो, पूरा चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज, एनी नंबर that is ending with 5, how to find the square of that number, any number that is ending with 5, example 65 का square, any number that ends with 5, how to find the square of that number without a calculation। देखो, first write always 25, last 2 digit is always 25, last 2 digit always, now remove this 5, the number is 6, what is number after 6 in counting, है ना, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इसको सामने लिख दो 4225, होगा 75 स्क्वायर 25 is 7, number after 7 7 8 are 75625, 85 square 25, after 8 9, multiply 7225, next 95 square 9025, 125 square 25, 12 after 12 13, 12 13s 156, so 15625, सेम वे आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, 1225 फाइंड करना स्क्वायर रूट, लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये तो 5 लिख देना, ये नंबर क्या है, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स whose product is 12, 3 and 4, इसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर ये इसके सामने, सो आंसर इज 3 5, 3 5, है ना, अंडर रूट, ठीक है, 1 2025, 2025, बताओ ये नंबर 5 and 4, स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4, 40 स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ना, now take NCERT, exercise surface area and volume, first exercise surface area and volume, first exercise chapter 12, question number 2, first question number 2, now question draw the figure, or now question draw the figure, a vessel is in the form of hollow hemisphere, hollow, so this open होगा, ठीक है, solid नहीं है,
Hollow hemisphere. First draw the figure. Hollow hemisphere. Hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted by a hollow cylinder. It is also R. It is also R. So cylinder का radius R है और हेमिस्फीयर का सेम रेडियस है ना, क्यों? इसको ऊपर माउंट किया हुआ है, ठीक है? दोनों का बेस सेम है ना, सिलेंडर का बेस और हेमिस्फीयर का बेस बोथ आर सेम, सो रेडियस रिमेन्स सेम. और क्या क्या गिवन देखो. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, सो व्हाट इज द रेडियस? सो राइट ऑन फर्स्ट statement, very important. Radius of hemisphere, radius of hemisphere, write in bracket small r, is equal to 7 centimeter. What is the radius of the cylinder? What is the radius of the cylinder? We can apply, we can write the same letter, that is R. Radius of the cylinder, that is equal to small letter R. Radius of the cylinder, that is small letter R. That is equal to 7 centimeter. What is the radius of the cylinder? 7 centimeter. Radius of the cylinder is also same, that is equal to 7 centimeter. What is the radius of the cylinder? 7 centimeter. Or radius of the hemisphere? 7 centimeter. Radius of the cylinder? 7 centimeter. Both are same. So we can apply both same letter. We can write. है ना? Next. और क्या given question है? The total height of the vessel given है कितना है? 13. What a total height means is ऊपर से नीचे तक कितना है? 30. ये हाइट है. ये बताओ, इधर से इधर तक कितना हाइट है? 13. So what is the value of h? 13 minus r. R की वैल्यू कितना है? 7. What is the answer? 6. Right on. Height of the cylinder. Height of cylinder. Write in bracket small h is equal to 13 minus 7, that is equal to, है ना? देखो इधर से इधर तक h है, इधर से इधर तक r है, so h plus r equal to 13, है ना? So what is the value of r? 7. So what is the value of h? 13 minus 6, that is equal 30 minus 7, that is equal to 6. नेक्स्ट लिख दो. और क्या फाइंड करना है इसमें? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इनर है, आउटर है, कोई पूछा तो क्या फाइंड करके बोला हमें? इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? ये ओपन है, क्लोज्ड है? ओपन. व्हाई इट इज ओपन? होलो, है ना? ये होलो होता है, ये होलो सिलेंडर गिवन है, जिसको है होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर. राइट ऑन. CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. What is the CSA of cylinder formula? 2 pi r h. CSA of the hemisphere 2 pi r square.
और मत करना। कैलकुलेशन पार्ट एक बार देखो, इस तरह से स्टेटमेंट पूरा हर क्वेश्चन में लेना चाहिए, ठीक है। जो जो क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो, कौन सा लेटर यूज करो वही लिख देना ब्रैकेट में। क्लियर है? क्लियर? और देखो पहले चेक करो, इसमें अभी वैल्यू पुट नहीं करना आपको। वैल्यू पुट करने के पहले क्या करना है, कॉमन लेना। पहले कॉमन लेना, क्या कॉमन है इसमें, 2 पाई आर। अंदर क्या होगा फिर, मत करना, दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, H 6, R 7 7 मल्टीप्लाई नहीं करना अभी। देखो 2 इंटू 22 को क्या लिखना चाहिए, 2 इंटू 11 छोड़ के बाकी सब मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 2 26 इंटू 2 52 52 इंटू 11 5 प्लस 2 7, बीच में लगा दो, क्या आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेथड, क्लियर है? Yes, 2 into 13 26, 26 into 2 52, 52 5 plus 2 7, बीच में लगा देना। So 5 plus 2 7, so what is answer 572। एरिया तो स्क्वायर में आएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मेथड क्लियर? सुनो भेजो। Third question. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. तो हेमिस्फीयर इसके ऊपर क्या है, कोन। सो ड्रॉ द फिगर। क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कोन, राइट इन ब्रैकेट स्मॉल लेटर आर, दोनों को सेम लेटर लिख सकते हैं ना, सेम रेडियस, बेस सेम है। सो फर्स्ट तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, राइट इन ब्रैकेट स्मॉल लेटर आर, small letter r is equal to 3.5 centimeter. Next, radius of cone, .5. Both have same base, so we can write the same letter for both, है ना, radius same है। और the height of the cone, small letter h, and total height of the toy कितना गिवन है, 15.5। So what is the height of the cone, 15.5 minus 3.5, that is equal to 12 centimeter. What is the total surface area of the toy? CSA of cone plus CSA of hemisphere. What is the formula to find the CSA of a cone? Pi r L, but L is not given. We can apply Pythagoras theorem. Apply first to find the L. L squared is equal to
h square plus r square. What is h? 12 square plus 3.5 whole square. 12 का square 140. देखो 5 ending with 5. Any number that is ending with 5 we can find the square by direct. कौन सा? 25. 3 4s are 12. 12.25. Add किया तो 156.25. So L is equal to square root. देखो square root फॉर्मूला इजी है. डेसिमल छोड़ दो. डेसिमल तो बाद में लगा दो. 5. 156. Two consecutive numbers whose product is 156. 12 and 13. अभी क्या था मैं? 12 and 13. Smallest number कौन सा है? 12. What is the answer? एक डेसिमल. 12.5 centi. Of and the total surface area of toy. TSA of toy is equal to CSA of cone plus CSA of hemisphere. What is CSA of cone? Plus CSA of hemisphere 2 pi r square. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? कॉमन. क्या कॉमन है? पाई r कॉमन. अंदर l प्लस 2r. पाई 22/7. रेडियस 3.5. l 12.5 plus 2r. 2 into 3.5 7. So answer is 22 into, और देखो ये 7 3.5 से कैंसिल. 0.5 into 19.5. देखो लिसन. 22 into 0.5 11. 0.5 का मतलब 1/2. 1/2 into 22 क्या हुआ? 11. So 11 into 19.5. देखो 19.5 ऐड करना क्या हुआ? 5. इधर 19 लिख दिया. 19 plus 5 24. 2 ऐड किया तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्लियर है? 195 है ना. 190 3 नंबर आया तो क्या करने के बोला मैं? 19.5 ऐड कर दो. 24 2 ऐड किया तो 2145. एक डेसिमल लगा दो यार. ठीक है. होमवर्क NCERT exercise 12.1 question number 2 3 6 7 8 9.